अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वह है मोशन इन 1, 2 एंड 3 डिमेंशंस। तो यही टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो इससे पहले हमने डिस्कस किया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड टाइप्स ऑफ फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है। तो उसमें आपने देखा कि अगर एक पार्टिकल है somewhere in space at point P at an instant of time t. Okay? And in order to locate the position of the particle at given instant of time t, which is lying somewhere in space at point P, we require frame of reference. And the frame of reference जो हम यहाँ पे consider करते हैं, it is three-dimensional rectangular coordinate system like this. This is x-axis here, and this axis is y-axis, and this axis is z-axis. All the three axes are mutually perpendicular to each other, intersecting each other at a point O, and this O is called the origin of the coordinate axis, as you know, and is also called a reference point. And now, in order to locate, in order to specify, in order to describe the position of the particle at given instant of time, how many position coordinates are required? 3. Suppose x, y, and z. तो इसका मतलब क्या है? In order to reach at point P, we have to move along first along x-axis, x distance, then along y-axis, y distance, then along z-axis, z distance. ठीक है ना? These are the three distances: x distance along x-axis, y distance along y-axis, z distance along z-axis. Okay? And then we will reach at the point P. So 3 position coordinates are required. And if the particle is in motion, then what will happen? Either one position coordinate of the particle will change out of 3, or the 2 position coordinates out of 3 will change, or sometimes all the 3 position coordinates of the particle will change during its motion. ठीक है ना? So it is not necessary that during the motion of the particle or object all the 3 position coordinates will change with time. ठीक है ना? So sometimes only one coordinate will change. There are certain cases where only one position coordinate of the particle changes with time, and there are certain other situations where the 2 coordinates of the particle changes with time, and there are certain other cases in which all the 3 position coordinates change with respect to time. Is this clear to you? Okay. Now we will discuss the situations one by one. The situation where only one position coordinate will change, and then we will discuss the situation where 2 out of 3 position coordinates will change during the motion of the particle, and then we will discuss the situation in which all the 3 position coordinates of the particle will change with respect to time. And then first, suppose only one position coordinate of the particle changes. ठीक है ना? यहाँ पे मान लीजिए इसके यहाँ पे at point P the position coordinates are x, y, and z at an instant of time t. ठीक है? And the point is here. Suppose the particle is moving along a straight track parallel to what? X-axis, like this. In this case, it is going along this line, and this line is parallel to what? X-axis. In this case, only one position coordinate will change out of 3 position coordinates. कौन सा position coordinate? As it is moving parallel to x-axis, only x will change, while as other 2 position coordinates, जैसे कि y coordinate है, z coordinate है, they remain same. There will be no change in y coordinate, z coordinate. ठीक है ना? क्योंकि अगर y coordinate change हो जाएगा तो particle will go up. ये ऊपर नहीं जा रहा है. अगर z coordinate change हो जाएगा तो ये बाहर आएगा, ऐसे along z axis या अंदर जाएगा. इस डायरेक्शन में भी मोशन नहीं है. The motion is along a line which is parallel to what? X axis. So its position changes only along
x axis. So it means that अगर पार्टिकल यहाँ पे अगर यहाँ पे पहुंचा एट पॉइंट Q, तो Q पे क्या पोजिशन कोऑर्डिनेट्स होंगे? x डैश, y वही रहेगा, z भी वही रहेगा, एंड टाइम विल बी t डैश. Is this clear to you? So at point P, इसके कोऑर्डिनेट्स है x y z at instant of time t, and at point Q इसके पोजिशन कोऑर्डिनेट्स है x dash y z. Y and z तो सेम रहेंगे. There is change in x only. Is this clear to you? So in this case, the only one position coordinate of the particle changes with time during its motion. ठीक है ना? So अगर ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें खाली एक ही पोजिशन कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है ना, तो उस केस में ना हमें z एक्सिस की जरूरत है, तो एक ही एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, दैट इज x एक्सिस, बिकॉज ओनली x कोऑर्डिनेट चेंजेस. ठीक है ना? तो इस कोऑर्डिनेट की जरूरत ही नहीं है, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत नहीं है, न इस एक्सिस की जरूरत है. ओनली वन एक्सिस इज रिक्वायर्ड. ठीक है ना? अब इसी तरह से अगर पार्टिकल मूव करेगा इन वर्टिकली अपवर्ड्स लाइक दिस, इस डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले यहां पे था एट पोजिशन P, अब यहां पे चला गया एट पोजिशन Q. इन दिस केस ओनली वन कोऑर्डिनेट विल चेंज. वो कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? y कोऑर्डिनेट. तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? सपोज x, y एंड z. सो यहां पे मैं दिखा दूंगा, अगर ये पार्टिकल, ये पॉइंट P है, यहां पे मैं बता दूंगा यहां पे, तो यहां से अगर ये ऊपर की तरफ जाएगा इस डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड्स, देन अगर ये यहां पे पहुंचा एट पॉइंट Q डैश, तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? द x कोऑर्डिनेट विल रिमेन सेम बिकॉज देयर इज नो चेंज इन द x डिस्टेंस. इट इज नॉट मूविंग अलोंग x एक्सिस. ओके, सो x विल रिमेन सेम. व्हाट अबाउट y? इसका y कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा इसका y डैश. तो z कोऑर्डिनेट तो सेम रहता है, तो z ये सेम रहेगा एट इंस्टेंट ऑफ टाइम. दिस इज t डैश. ओके, इज दिस क्लियर टू यू? अगर ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो उस वक्त हमें खाली y एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ना x एक्सिस की जरूरत पड़ेगी, ना z एक्सिस की जरूरत पड़ेगी. सिमिलरली अगर पार्टिकल बाहर आएगा इस तरह से, तो उस वक्त खाली z कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा व्हाइल अदर द कोऑर्डिनेट्स रिमेन सेम. इज दिस क्लियर टू यू? तो इन दिस केस तो पहले केस पे आ जाएगी, जैसे यहां पे मैंने दिखा दिया कि ओनली x कोऑर्डिनेट चेंज. तो इधर x कोऑर्डिनेट चेंज ओनली y कोऑर्डिनेट चेंज और z कोऑर्डिनेट चेंजेस. ठीक है ना? तो चाहे x कोऑर्डिनेट चेंज हो जाए वो, तो हमें एक ही एक्सिस की जरूरत है, एक ही एक्सिस की जरूरत है टू स्पेसिफाई, टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम. तो यहां पे मैं दिखा दूंगा. So if a particle, whenever a particle moves along a straight line, it's clear from this discussion that whenever a particle or an object moves along a straight track, straight path, only one axis is required, coordinate axis is required to specify, to locate the position of the particle at given instant of time. तो यहाँ पे एक ही एक्सिस ले लेंगे, तो एक्सिस किस डायरेक्शन में लेंगे? तो एक्सिस उसी डायरेक्शन में लेंगे जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा होगा. ठीक है ना? अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में एक्सिस लेंगे. ठीक है? अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इसी डायरेक्शन में हम एक्सिस ले लेंगे. अगर वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक्सिस लेंगे. तो एक ही एक्सिस लेनी है, एक ही कोऑर्डिनेट एक्सिस लेनी है. सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सिस OX and the particle is moving along this axis at, suppose at instant of time it is somewhere here at point P, at point P at instant of time T. Okay, and now what is the position of the particle? Suppose it is at a distance x from the origin of the coordinate axis O, from O. Is this clear? From O. यहां से x डिस्टेंस की दूरी पे at an instant of time t. ठीक है ना? Okay, so it means that in order to locate, in order to specify the position of the particle at given instant of time, we require only one coordinate, that is x coordinate. ठीक है ना? एक ही डिस्टेंस, that is OP, O से लेकर P तक हमें डिस्टेंस अगर पता होगी, if we know the x distance, ठीक है ना, then we can locate the position of the particle. एक ही पोजिशन कोऑर्डिनेट की जरूरत है. ठीक है ना? And now after some time, suppose the particle is somewhere here at instant of time t dash.
ठीक है. तो and this time it is distance from origin O will be x dash. X dash से represent करेंगे. It is different. So again, अगर ये particle move कर रहा है, it goes from P to Q. Again, we require only one coordinate. ठीक है ना? That is x coordinate is required to specify the position of the particle at an instant of time P dash. Is this clear to you? तो इस तरह की motion जो होगी, so it means that whenever a particle is or a body is moving along a straight track, only one coordinate is required to locate or specify the motion of the particle. ठीक है ना? And such a motion is called motion in one dimension. ठीक है ना? This is called one motion. This is called one dimensional motion. Is this clear to you? So what is one dimensional motion? Thus, we can write here the particle is said to have one dimensional motion if only one out of its three position coordinates changes with respect to time. As is clear to you? The particle is said to have one-dimensional motion if only one out of its three position coordinates changes with respect to time. इसको कहते हैं one-dimensional motion. Is this clear to you? Okay. For example, motion of suppose motion of a particle along straight track. ठीक है ना? तो यहाँ पे example देते हैं motion of a car along a straight track in a narrow track होगा, उस पे उसकी motion है. Motion of train along a narrow railway track. Is this clear? Along a straight track, along a straight railway track is one-dimensional motion. Is an example of one-dimensional motion. ठीक है ना? एक और example देते हैं. Suppose a load is suspended from a rigid support by means of a spring. This load is spring here. यहाँ से rigid support है, ऊपर कोई fix है, ठीक है ना? rigid support के साथ hang है ये spring, इसको यहाँ से load attach करेंगे इसके साथ. And if this load is slightly displaced downwards, अगर force apply करेंगे, इसको stretch करेंगे downwards इस direction में, then release it. It will oscillate like this, up and down. And the motion of this load spring is called one-dimensional motion. Similarly, if we release an object from certain height, like this marker, it goes straight out due to gravity. अगर हम यहाँ से कोई object छोड़ देंगे, it goes straight downwards in this direction. And the motion of this downward motion of freely falling object above from certain distance, from certain height, is the example of one-dimensional motion. Okay? इसी तरह से है. अब अगर यहाँ पे मैं दिखा दूं एक पार्टिकल पहले से, जैसे पहले मैंने बता दिया, एक पार्टिकल है यहाँ पे एट पॉइंट पी, इसके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड. अब मान लीजिए आउट ऑफ दीज थ्री पोजीशन कोऑर्डिनेट्स टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स चेंज, ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू टाइम. एक्स एंड वाई चेंज हो रहा है, तो पार्टिकल उस वक्त कैसे मूव करेगा? Then at that time the particle will move on a plane, not on a straight track. It will move on a plane. ठीक है ना? It will move in a plane. तो यहाँ पे एक प्लेन है, एक प्लेन पे वो मूव करेगा. जब ये प्लेन पे मूव करेगा, मान लीजिए एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है, ठीक है ना? जब ये एक्स वाई प्लेन पे मूव कर रहा है इस तरह से, the path will be curved on a plane or in a plane. Is this clear to you? तो motion of a particle in a plane is said to be two-dimensional motion. Is this clear to you? This is an example. So in this case, two coordinates out of three coordinates will change.
Like an example, the example is here, motion of crawling insect on a plane. अगर कोई इस प्लेन पे व्हाइट बोर्ड पे कोई इंसेक्ट है, अगर यहाँ से जा रहा है फिर यहाँ से ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, तो उसकी मोशन जो होगी उसको हम कहेंगे टू डायमेंशनल मोशन, क्योंकि ड्यूरिंग इट्स मोशन ओनली टू कोऑर्डिनेट्स विल चेंज आउट ऑफ थ्री पोजिशन कोऑर्डिनेट्स. Does this clear to you? तो अगर टू डायमेंशनल मोशन है तो टू डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए वी रिक्वायर ओनली टू coordinate axes, not three coordinate axes. तो यहाँ पे मैं दिखा दूंगा only two coordinate axes are required. मान लीजिए a particle is moving on plane xy plane. तो we are required here only two axes. This is x axis and this is y axis. And the particle is moving on in this plane. Suppose at instant of time it is somewhere here at point P. तो पॉइंट P इसको लोकेट करना है. कहां पे होगा ये पॉइंट P? तो फर्स्ट वी हैव टू मूव अ डिस्टेंस इन x डायरेक्शन. इस डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा. सो सपोज x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन बाय द पार्टिकल, एंड फिर ऊपर जाना पड़ेगा. सो y इज द डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल इन y डायरेक्शन. इज दिस क्लियर टू यू? सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? X and Y. So it means that in order to reach at point P at a given subtime, in order to reach at point P, in order to locate the point P particle which is situated at point P, we have to first move from X distance in X direction and then Y distance in Y direction. Is this clear to you? We will reach at the point P. So particle is here at point P. So two position coordinates are required to locate or specify the position of the particle. And now if this particle is moving, ठीक है ना, and somewhere it is somewhere here at point Q, ठीक है ना, it follows a curved path like this, and now it is here at point Q, और straight path में हो सकता है curved path हम ले लेंगे यहाँ पे जनरली, क्योंकि straight path जब होगी तो हम वहाँ पे उसको कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन. तो वहाँ पे एक ही कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पे Q पे पहुंचाए तो Q पे इसकी कोऑर्डिनेट्स होंगे x dash and y dash. Is this clear to you? तो again only two position coordinates are required, x and y, in order to locate, in order to specify the position of the particle. So then the particle is said to have two dimensional motion. So what is two dimensional motion? Thus the particle is said to have two dimensional motion if only two out of its three position coordinates change with respect to time. Is this clear to you? तो तीन में से खाली दो पोजिशन कोऑर्डिनेट्स अगर चेंज हो जाएंगे तो उसको कहते हैं टू डायमेंशनल मोशन. व्हेन द पार्टिकल सेट है टू डायमेंशनल मोशन. ठीक है ना. तो एग्जांपल मैंने दी है द मोशन ऑफ क्राउलिंग इन इंसेक्ट इन अ प्लेन इज द एग्जांपल. सिमिलरली एक और एग्जांपल है, अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, इफ आई थ्रो इट एट सम एंगल, ठीक है ना, जिसको हम कहते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन. ठीक है ना, ऐसे थ्रू करेंगे या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन ऐसे थ्रू करेंगे. द मोशन ऑफ द पार्टिकल, द मोशन ऑफ द मार्कर इज टू डायमेंशनल मोशन. इसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. अगर हम कोई चीज फायर करेंगे इस तरह से इस डायरेक्शन विद सम इनिशियल वेलोसिटी, इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस, एंड द पाथ इज कर्व्ड पाथ, and the path is lying on what? On a plane. Is this clear to you? And this in this case only two position coordinates of the projectile change, taken up with respect to time. Therefore the motion of the projectile is an example of two-dimensional motion. Is this clear to you? तो इसी तरह से एंगुलर प्रोजेक्शन भी होता है. अगर इस डायरेक्शन में हमने फायर किया किसी ऑब्जेक्ट को, लॉन्च किया, तो इट विल फॉलो अ पाथ लाइक दिस, एंड दिस कॉल्ड पैराबोलिक पाथ. इसको पैराबोलिक पाथ कहते हैं. ठीक है ना.
So the motion is called projectile motion. This is the example of two-dimensional motion. Is this clear to you? Okay. इसी तरह से तो अगर if all the three position coordinates change with respect to time, अगर तीनों position coordinates change हो जाएंगे, in that case all the three coordinate axes are required. उस वक्त तीनों coordinate axes की जरूरत पड़ती है to specify the position of the particle at given instant of time, at any instant of time. Is this clear to you? All the three. यहाँ पे particle है at point P space में, इसके position coordinates है x, y, z. ठीक है ना? अब अगर ये space में है तो किसी और जगह पे चला गया, मान लीजिए यहाँ पे चला गया, तो यहाँ पे इसके position coordinates क्या है? At point Q, x dash, y dash and z dash. Different coordinates होंगे. Is this clear to you? Then the motion of the particle is said to be three-dimensional motion. Is this clear to you? For example, motion of flying bird, or motion of flying aeroplane. ठीक है ना? Motion of flying aeroplane is an example of three-dimensional motion. Similarly, the motion of flying bird is an example of three-dimensional motion because एक तो वो जा रहा है ऐसे डिस्टेंस कवर करते हैं, इसका एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसके साथ साथ ऊपर भी जा रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है, फिर दाएं बाएं भी जा रहा है ऐसे. ठीक है ना? तो इसके जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होते हैं, जेड कोऑर्डिनेट भी चेंज होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी, वाई कोऑर्डिनेट भी. सो द मोशन ऑफ द फ्लाइंग बर्ड or the motion of this flying aeroplane is said to be three-dimensional motion. So what is three-dimensional motion? इसी तरह से the particle is said to have three-dimensional motion if all its three position coordinates change with respect to time. Is this clear to you? तो इस तरह से हमने ये one-dimensional motion, two-dimensional motion and three-dimensional motion आज डिस्कस किया. बाकी वसलाम. Thank you very much.